That's what my question. What, Madam Ochekar, Madam? Am I audible to you? Yes, you're absolutely. You're audible. Okay, fine, very good. Good morning. Good morning to you as well. Good morning. Good morning. Good morning. Students are going to come. Kapadia sir, madam, let us wait for 5 minutes for others to join, and within next 5 minutes we will start the Okay. function. Is it okay? Yeah. Yeah, that should be fine. No problem for us.
Is YouTube live streaming is started? Our technical Yes, sir. support. Yes, sir. Yes. Okay. Are you prepared? Can we proceed now? Yes, sir. YouTube live streaming has been started, sir. Comparer, anchor. Yes, sir, ready. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Let us start. Very good morning to one and all present here. I am Priyanka Auti on behalf of Sri Bhausad Vartak College. Welcome you all for the online valedictory function of lecture series on entrepreneurship development organized by Faculty of Commerce. Entrepreneurship is a key driver of economic growth and development. There are the three pillars who build the country. One farmer, soldier, and third one, very important, entrepreneur. Entrepreneurs are the assets of the country. They are not only an agent of economic growth, but also performs a role of social agent by improving quality of life of citizens. It is witnessed that in the history of developed country, that entrepreneur plays a significant role. Therefore, it is a need of an hour to develop entrepreneurship and inculcate the skill among the students. Today is the valedictory function of the lecture series on entrepreneurship development. We are really fortunate that on this occasion we have with us an eminent personality, Mr. Mahendra Bhai Kapadi, as president. He is a well-known international author and speaker. I heartily welcome you, sir. Also, for the third day lecture series, we have with us Mrs. Sonali Kosrikar as a chief guest and resource person. She is the owner of Sonali Consumer Products Limited. I heartily welcome you now and all you all. Now, I request our principal, Dr. S.B. Karande sir, to deliver his welcome speech. Thank you very much, madam. Am I audible? Yes, sir. Very good morning, one and all present on this online platform. President of this valedictory function of online lecture series organized by Department of Commerce, Honorable Mahendra Bhai Kapadia, international author and speaker, Mumbai, chief guest and resource person of today's session, Honorable Mrs. Sonali Kochrekar, well-known entrepreneur, Vice Principal Dr. Mahesh Auti sir, teachers and their students. As the in-charge principal of the college, on behalf of our college and my personal behalf, I warmly welcome all the dignitaries and you all in this program. Students, I would like to mention here, Gokhale Education Society is our parent institution. Therefore, I would like to brief about Gokhale Education Society and about our college. Gokhale Education Society is known for student discipline, academic excellence, professional competency, and innovative programs with a track record of students and staff achievements. The Gokhale Education Society is committed to the cause of students' empowerment through access to education at all levels, particularly in higher education, to have world-class citizenship through relevant courses under formal and informal streams. Further, the society is committed to raise the dignity of the teaching profession and establish a culture of caring and excellence by providing a wide range of professional and vocational courses for poor and downtrodden as far as the Adivasi classes also, to meet the changing socioeconomic needs with human values and social responsibilities. To achieve excellence with total quality in all activities of lifelong learning in the main motive of Gokhale Education Society. Friends, Gokhale Education Society
established this Arts, Commerce, and Science College at Borivali West in June 1979. The college was thereafter renamed as Gokul Education Society, Sri Bhausaheb Vartak Arts, Commerce, and Science College on 19 February 1990. It is permanently affiliated to the University of Mumbai and re-accredited by NAC. Our college has completed 44 years of its fruitful existence. It has received ISO 9001 2015 certification for its system and efficient governance. The mission of the college is to build strong group of young people with discipline and character to make our society proud of them and to develop the multidimensional personality of our students. Our various academic departments, various associations, different committees, statutory and non-statutory bodies continuously conducts curricular, co-curricular, and extracurricular activities for the overall development of the students. As a part of curricular activity, the Department of Commerce has taken an initiative and organized this online 3 days lecture series on entrepreneurship development. And the day today is the last day of this 3 days lecture series. Today's resource person would guide our students on the topic a success story of an entrepreneur. To develop the entrepreneur skill is the need of the art. I'm sure such type of talks and guidance will motivate and inspire our students to become an entrepreneur. Really, I congratulate and appreciate the entire team of Department of Commerce for organizing such events for the benefits of the students. Once again, I welcome one and all present on this online platform, and I would like to extend my sincere thanks towards Honorable Sonali Kochrekar Madam and Honorable Sri Mahendra Bhai Kapadia for giving their valuable time for us. Thank you very much, one and all, those who taken an initiative for organizing this event. Thank you very much. Over to Priyanka Madam. Thank you very much, sir, for your warm welcome. Now, I request Dr. MDOT, Vice Principal and HOD of Commerce Department, to say about the lecture series. Thank you. Am I audible? Yes, yes. Yes, sir. Good morning. President of today's online valedictory function of lecture series on entrepreneurship development, Honorable Mr. Mahendra Bhai Kapadia, member of our college development committee and international speaker and author, chief guest and resource person, respected Ms. Sonali Kochrekar, a successful entrepreneur from Mumbai, principal of our college, Dr. S.B. Karande, all coordinators of self-finance courses, faculty members of commerce and self-finance courses, and dear students, friends. It gives me an immense pleasure to brief about the online lecture series organized by the Faculty of Commerce from 10th January to 12th January 2024. As we know that today is the birth anniversary of Swami Vivekananda and Rajamata Jijau, mother of Chhatrapati Shivaji Maharaj. We should remember contribution of both of them for building of our nation, and let us salute to both of them for their meaningful and significant contribution on their birth anniversary day. I remember Swami Vivekananda's great message to the young generation. Uttishta, Jagrata, and Prapya Varani Bodhata, which means arise, awake, and do not stop till the goal is achieved. उठा, जागे व्हा आणि ध्येय साध्य होईपर्यंत थांबू नका असा दिव्य संदेश स्वामी विवेकानंदांनी आजच्या या युवा वर्गाला, युवा पिढीला दिलेला आहे. स्वामी विवेकानंद considered the youth as the real power of our nation. He wanted to make overall development
of our country. He wanted to build our country, our nation holistically, and entrepreneurial, industrial development is one of the important components or facets of the national development. And we know that Rajmata Jijau inculcated the values of our Indian culture, philosophy, and idealism by telling stories of Ramayana, Mahabharata, Bhagavad to Bal Shivaji. आणि एक स्वराज्याची भावना, प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराजांना राजमाता जिजाऊ यांनी दिलेली आहे. आपण या प्रसंगी त्यांना नमन करूया. And as I tell you, industrial and entrepreneurial development is one of the aspects of our national development. And in order to provide the practical exposure of the corporate world, entrepreneurial world, in order to broaden the vision of our students, in order to develop the aspirations among our students of becoming entrepreneurs, professionals, corporate people for tomorrow, and also in order to bridge the gap between academics and industry, theory and practical. In the academic year 2021 and 2022, under the guidance of then principal of our college and today's chairperson of our local education society, Honorable Principal Dr. Mrs. S.P. Sun, we have started organizing a lecture series on a very relevant, significant, and contemporary theme, that is entrepreneurship development, under which every year we organize the successful entrepreneurs, experienced entrepreneurs. We request them, we invite them, we request them to share their rich experience and expertise with our students, to provide practical exposure of the entrepreneurial world, to develop. We request them to develop the entrepreneurial skills, competencies, and qualities among our students. We want to transform our students from job seekers to job providers. We want to transform our students into committed, value-based, responsible citizen of our country. So, for these purposes, for these objectives, every year we organize a lecture series on entrepreneurship development. So this is the third year of this lecture series. And I am very happy to inform you all that on 10th January, Mr. Somnachi Rachi, Director, Anmol Sales Corporation, a senior and successful entrepreneur from Nashik, he guided our students on new tools for entrepreneurship development. He interacted with our students. He motivated and inspired of our students. As chief guest and resource person for the inaugural function, Honorable Principal Dr. Mrs. S.P. Sun, chairperson of Local Education Society and former principal of this college, presided over the function, and she also expressed her valuable thoughts with all of us and guided us on the occasion. On the second day, that is on 11th January, Mrs. Vrunda Acharya, she has guided and she has shared her views on women entrepreneurship, challenges and prospects. And today, in this valedictory function and session, we have with us Mr. Mahendra Bhai Kapadia, who is an international speaker and author, a consultant and a learned personality, having a unique combination of the corporate experience and spirituality. So in my opinion, he is the right authority, he is the right person to preside over the valedictory function and this session and to guide us, to bless our students. Today, Ms. Sonali Kotrekar is with us as the chief guest and a resource person for this valedictory function and session. And she has consented to guide our students
on success story of an entrepreneur. मला एक सांगितलं पाहिजे की भारतीय स्त्री शक्ती आणि अभिउद्योगिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपल्या महाविद्यालयामध्ये वर्षभर दर महिन्याला एक याप्रमाणे उद्योजकता विकासावरती एक कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. त्याचा मार्च 2023 मध्ये समारोपाचा सोहळा होता. त्यावेळी कुसरेकर मॅडम आणि माझा त्यावेळी परिचय झाला होता. वृंदा आचार्य मॅडमनीही त्यांचा संदर्भ दिलेला आहे आणि एक शून्यातून विश्व कसं निर्माण करायचं, शून्यातून उद्योजकीय विश्व कसं साकार करायचं याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून आपण कुसरेकर मॅडमकडे आपण बघू शकतो. आणि रिअली आपण पुस्तकात वाचून काय सांगतो त्याही पेक्षा आपण स्वतः जे अनुभवलेलं आहे, स्वतः जे जगलेलं आहे आणि स्वतः जे जे काही प्रयत्न केलेले आहे तर ती आपली स्वतःचीच स्टोरी, स्वतःचीच एक यशोगाथा जर आपण विद्यार्थ्यांसमोर उलगडून जर सांगितली तर निश्चितपणे विद्यार्थ्यांना एक खूप चांगली स्फूर्ती, चांगली प्रेरणा आणि चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन मिळू शकेल असा आम्हाला विश्वास आहे. That's why we have requested Ms. Sonali Kusrekar and we have cordially invited her. She has accepted our invitation and she is going to share her success story as an entrepreneur with all of us. And definitely, I am quite sure that our students will be getting a real motivation, real guidance and inspiration from the success story of Sonali Kusrekar. So, definitely, this lecture series by considering the resource persons, two are the women entrepreneurs. We have invited and we have involved in this lecture series. And it is said that yes, naryastu pujante ramante tatra devata. महिला या कुठेही मागे नाहीत, किंबहुना त्या पुरुषांच्या बरोबरीनं काम करतायत, किंबहुना त्या पुढे एक पाऊल पुढे जाऊन त्या प्रगती करतायत. And definitely yesterday Mrs. Vrunda Acharya guided our she has and future opportunities for the women entrepreneurship. And today, Ms. Sonali Kusrekar is going to guide us on success story of an entrepreneur. Definitely, our students have got a lot of academic entrepreneurial inputs and guidance, blessings, motivation, and inspiration given by these resource persons and president of the inaugural function and valedictory function. Definitely, our students will be getting a lot of exposure and lot of inspiration they will get, and definitely it will help to shape their personality holistically to become tomorrow's entrepreneurs. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your brief summary of this lecture series. Now I request Ms. Saili Matre to introduce our eminent guest. Thank you, Priyanka ma'am. Good morning, everyone. I'm grateful for the opportunity given to introduce today's president, Mr. Mahindra Kapadia, who is a futuristic coach, speaker, and author with 30 years of business experience with renowned Indian corporate in manufacturing and constructing industry. Sir has been contributing to help CEOs, executives to manage uncertainty in business and raise creativity level to achieve high business performance. During last 4 years, Sir has helped around 1,900 plus executives for leading corporate. Sir has unique insight about people, powerful ideas and energy and mindset change which helps one get rid of self-limiting belief. Mr. Kapadia was designated as founder and chief innovation officer in Tapping Inner Power. Sir has published many books, each include real life stories. Sir has done his BTech from IIT Mumbai, post graduation in management from JBIMS, and MSc in counseling and spiritual health. Mr. Kapadia analyzed the power of conviction with his personal goal to help everyone reach their full potential. On behalf of our college, I will welcome you, sir.
Now I would like to introduce today's resource person, Mrs. Sonali Koshrikar. She has established herself as a data research analyst in the field of pharmaceutical. She has tremendous knowledge in new age dietary trends. Due to her passion for healthy food, while practicing as a dietitian, she found how processed food diet can be replaced by Ayurvedic superfood. This inspired her to venture in appetite food in 2020, which is known as Sonali Consumer Product Limited. Over the last couple of years, companies have aligned healthy products with the latest trends in nutrition and integrated with benefits of Ayurveda as well as traditional food system. Mrs. Sonali Ukosrekar is awarded as one of Madam, you are not audible. Matre, madam? Am I audible, sir? Yes, now you are audible. Okay. So Mrs. Sonali has a passion for helping people develop healthy relationship with the food. Joining your session Empower is sure to be a recipe to success. On behalf of our college, I will welcome you, ma'am. Over to you, Priyanka, ma'am. Thank you very much, ma'am, for your good introduction. We are really fortunate that we have with us these eminent and well-known personalities. I must say it is really a good opportunity to our students. Now moving on, now we have a lecture series on success story of an entrepreneur. Success journey of an entrepreneur is never easy. It is always full of struggles. And specifically, when there is a woman, she has to face additional struggles and overcome them. Therefore, we are very interested to listen your success journey, ma'am. I request Sonali ma'am to share her success journey and inspire our students. Over to you, ma'am. Yeah. Good morning, everyone. So thank you so much, Gokhale Education Society, for inviting me. It's just 4 years now. It's a running 5th year in an entrepreneurship journey. And I started this journey with 5 laddus. It's a homemade laddus. जो महाराष्ट्रियंस है उनके घर पे जो लड्डूस बनते हैं, मेथी का लड्डू, मल्टी मिलेट लड्डू, मल्टीग्रेन लड्डू एंड मूंग का लड्डू. And it's like I'm a pharmacist, as you know, in my introduction उन्होंने introduce किया है कि last 12 years I worked with pharma industry as an data research analyst, और उसके बाद 5 लड्डू के साथ entrepreneurship का journey start करना. It's like as a woman and as a single parent, everyone is like कि आपको ये नहीं करना चाहिए. लड्डू क्या है? लड्डू तो घर पे बनते हैं. Why लड्डू? सो स्टार्ट तो प्रोडक्ट से ही हो जाती है जर्नी. एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी है कि जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना बिलीव करना पड़ता है कि आप उसको प्रमोट कर पाए, उसके बारे में बात कर पाए, उसको एक्सेलरेट कर पाए. सो जब मैंने ये 5 लड्डू के साथ जर्नी स्टार्ट की थी, इट्स अ होममेड लड्डू, घर से स्टार्ट हुआ, 25 kg से स्टार्ट हुआ एंड इट गोज अराउंड एक 100 kg तक पहुंचने के बाद आई रिजाइन माई जॉब एंड मैंने एक 500 स्क्वायर फीट का जगह ले लिया. वहां पे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. फंडिंग इज द मेजर इशू. अगेन जब वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती है तब डायरेक्ट बिलीव करने वाले लोग कम रहते हैं. सो आपको जो फंडिंग का पार्ट है, मतलब मैं जब अपनी जर्नी बता रही हूँ तो मैंने जहां जहां प्रॉब्लम्स फेस किए और वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करती गई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ. तो मेरे पास फंडिंग का बहुत बड़ा इशू था. एंड एक चीज बहुत अच्छी थी, डेटा रिसर्च एनालिस्ट होने की वजह से मैंने फंडिंग के जितने सोर्सेस थे वो सर्च करना स्टार्ट कर दिया. और उसमें मुझे गवर्नमेंट के जो फंडिंग अभी जो फंडिंग के ऑप्शंस ओपन हुए हैं, जैसे CMEGP, PMEGP, बहुत कुछ उन्होंने स्टार्ट किए थे, तो उसके डिटेल्स निकालना स्टार्ट कर दिया. CMEGP में मैंने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया.
सीएमजीपी से मुझे लोन क्लियर होने के लिए 7 मंथ्स लगे, जिसमें मेरा सर्वाइवल एवरीथिंग वाज देयर विथ माय प्रीवियस जॉब का जो भी आया था उसके ऊपर मैंने 7 मंथ सर्वाइव किया 5 लड्डूस के साथ। सीएमजीपी ने ट्रस्ट किया मेरे प्रोजेक्ट पे, मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे, मेरे प्रेजेंटेशंस पे, और उन्होंने मुझे 50 lakhs का फर्स्ट लोन अप्रूव किया। ऑन दैट 50 lakhs लोन आई स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री एंड आज मेरी 3 इंडस्ट्रीज है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। आज मुंबई, नासिक और कोलकाता ऐसे तीनों जगह पे मेरी फैक्ट्रीज है। अराउंड 2000 लोग मेरे यहाँ पे काम करते हैं इस वक्त, उसमें से 80% वुमेन्स है। सो ये जर्नी जब स्टार्ट हुई तब मैंने लड्डूस के साथ स्टार्ट तो कर दिया। मेरे लड्डूस घर से बहुत अच्छे बिक रहे थे। एज एवरीवन सेज कि एक टेबल पे जब लड्डू बेचने के लिए हम लोग एग्जीबिशन में खड़े होते, तो एग्जीबिशन में मैं अपने लड्डूस लेके खड़ी थी। जब मैं अपने लड्डूस लेके, होममेड लड्डूस थे तब वो 250 रुपीज केजी में जा रहे थे। जब मैंने उसको ब्रांडिंग में लाया, जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने उसको पैकेजिंग चढ़ाया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, सब कुछ किया, न्यूट्रिशनल फैक्ट और सब कुछ जो नॉर्म्स के हिसाब से आता है वो सब करने के बाद आई रियलाइज कि मेरा एक 6 लड्डू का बॉक्स 250 में हो गया। और वही सेम एग्जीबिशन में जब मैं खड़ी रहने लगी मेरे बॉक्सेस लेके, तो मुझे रिस्पॉन्स आना कम हो गया। लड्डूस, पापड़, पिकल्स, ये जो चीजें हैं वो आज भी माइंडसेट में है कि ये होममेड है और वो हम लोग ओपन में लेते हैं। जैसे लड्डूस है तो हम लोग हलवाई के पास ले लेते हैं, लड्डूस के लिए मैं बॉक्स में क्यों लूं और 250 रुपीज 6 लड्डू का क्यों दूं। यहाँ से मेरा एक्चुअली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि मुझे ये बॉक्स में पैक किए हुए लड्डूस लोगों तक पहुंचाने थे, उनके घर तक पहुंचाने थे। सो घर से 100 kg के लड्डू स्टार्ट हो गए थे। जब मैंने फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया तो फर्स्ट वीक में मेरे पास एक 25 ऑर्डर थे, ऑनलाइन ऑर्डर। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रही थी, और जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, उनको सेल कर रही थी। जैसे मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट किया मेरे लड्डूस का रेट बढ़ गया, भाव बढ़ गया, एमआरपी पे आ गए, और मेरे जो ओल्ड कस्टमर्स थे उन्होंने लड्डू लेना बंद कर दिया। हम लोग बहुत बार जब घर से स्टार्ट कर देते हैं इंटरप्रेन्योरशिप या हम घर से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो हम रियलाइज नहीं करते कि जब हम लोग एक्चुअल वर्ल्ड में, जब हम लोग एक्चुअल मार्केट में उतर रहे हैं, तब मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आएगा। आई वॉज वेरी प्रिटी श्योर कि मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि मैं घर से ही 100 kg दे रही हूँ। तो और डेफिनेटली मैं अगर इंडस्ट्री सेट करती हूँ, मशीनरीज डालती हूँ, तो मुझे 1 टन तक ऑर्डर आना चाहिए, और उसके बेसिस पे मैंने प्लान किए थे। सो आई रियलाइज कि मेरे कैलकुलेशंस गलत जा रहे हैं इनिशियली। इंटरप्रेनर बन गई, जॉब छोड़ दिया, पूरे सोसाइटी में बोल दिया कि मैं तो बिजनेस में आ गई हूँ। एक था कि पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं था, आगे ही जाना था। देन आई हायर्ड अ कंसल्टेंट, जो इंडस्ट्री कंसल्टेंट रहते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि इनिशियल स्पेस पे जहाँ पे बिजनेस ही इतना कम है, आपके पास फंडिंग ही लिमिटेड है, फंड्स इतने लिमिटेड है, आपने इंडस्ट्री सेट किया हुआ है, लोन चल रहा है, इस वक्त कंसल्टेंट हायर करना की सैलरी के साथ ये कितना अच्छा या कितना फिजिबल डिसीजन होगा। बट आई बिलीव कि मुझे एक पता था कि जहां पे मैं कम पड़ रही हूँ, मैं हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकती। मैं प्रोडक्ट बना लेती हूँ, मैं रेसिपीज बना लेती हूँ, मार्केट अभी तक मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया है, मेरा मार्केट रिसर्च कहीं पे कम पड़ गया है, और मुझे यहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत है। और जैसे ही खांसी होती है, ज्यादा बढ़ने से पहले, टीबी तक पहुंचने से पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैसे मैंने कंसल्टेंट हायर किए। इनिशियल लेवल पे उनका सैलरी शायद मैं जितना घर पे नहीं लेके जा रही थी उतना तो मैं उनको पे कर रही थी, बट दैट वर्थ इट। एक्चुअली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए, डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए, और मेरा पाथ जो मैं जाने की कोशिश कर रही थी। कैसे होता है कि आप एक पाथ को चूज कर लेते हो, बट यू नेवर नो कि वो पाथ में आगे जाके क्या क्या आने वाला है। और जब आपको पता है कि कुछ हर्डल्स है, तो आपको उसको ओवरकम करके या आपको उसके लिए छोटा पाथ दूसरा बना के उसको कैसे आगे बढ़ना है, ये मुझे मेरे कंसल्टेंट्स ने बताया। आई एम गुड स्टूडेंट, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए हम लोगों ने लड्डूस के साथ, जब मैं पैकेट पे लड्डू बेच रही थी वो नहीं जा रहे थे और मुझे बल्क मैन्युफैक्चरिंग में जाना था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग, जो 4 साल पहले सबके लिए नहीं कंसेप्ट था, मतलब जैसे मुझे नहीं पता था, बीइंग फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग इतनी आइडिया नहीं थी, और लड्डू में व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है इसकी भी आइडिया नहीं थी। सो व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया, तब मुझे पहले एक ब्रांड मिला, जिनको मैंने बोला कि मैं आपके लिए लड्डू बनाऊंगी, मैन्युफैक्चर्ड बाई में एटलीस्ट मेरे नाम आने दो।
और वहां से जर्नी स्टार्ट हो गया कि मुझे एक क्लाइंट मिला, 2 मिले, 3 मिले, और ऐसे करते करते 8 क्लाइंट मेरे हो गए। इन ईयर मैंने 8 क्लाइंट पकड़े और उनके व्हाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग करते करते एक जो सर्टन अमाउंट या सर्टन टर्नओवर मुझे जो चाहिए था वहां तक मैंने बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। अगेन टर्नओवर, ये कंसेप्ट जब इनिशियली हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत जन को पता नहीं होता कि जितना टर्नओवर होगा वैसे ही आपको फाइनेंसेस बैंक से अदर ऑर्गेनाइजेशन से अवेलेबल होती है। तो हमें डे 1 से हमारे पास आने वाला एक एक रुपया या जो भी हम लोग फंड्स रोटेट कर रहे हैं, रोलिंग पे डाल रहे हैं, वो बैंक से ही करना है। उससे आपका टर्नओवर बिल्ड होता जाता है। टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कंपनी आगे जाके मुझे आईपीओ तक लेके जानी थी। मेरा ड्रीम बड़ा था, शायद प्रोडक्ट होममेड घर से बनाया हुआ लड्डू था, बट ड्रीम बहुत बड़ा था। स्टार्टिंग में ही सोचा हुआ था कि ये कहाँ तक जाना है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग में 8 कंपनीज हो गई, जिससे मेरा रोलिंग स्टार्ट हो गया। बट रोलिंग हो रहा है, इस लेवल पे नहीं जा रहा है जहां पे बिजनेस एक्चुअल प्रॉफिटेबल होके मैं इसको बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर। सो मुझे क्या करना चाहिए? सो मैंने प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दी। प्रोडक्ट लाइन ऐड करने का प्लान भी ऐसे था कि मेरे मैक्सिमम कस्टमर जो थे विथ लड्डूस, वो एक सर्टन एज पे थे। जब हम लोग ने डेटा एनालिसिस किया तो 45 प्लस, उसके आगे के कस्टमर ये मेरे एक्चुअल कस्टमर थे। और उसमें से भी जब वो 55 प्लस हो जाते तो उनको ऑनलाइन जाके प्रोडक्ट लेना या खरीदना 100% लोगों को पता नहीं है। उसमें से शायद 40 या 30% लोग हैं जो ऑनलाइन जाके प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उनको अंडरस्टैंड होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, पेमेंट्स कैसे करने हैं उसके बाद। सो हम लोग ने टोल फ्री नंबर डालना शुरू कर दिया। और अगेन हम लोग ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास जो सेम रॉ मटेरियल थे उसी से मैंने एनर्जी बार्स बनाना शुरू कर दिया। जहाँ पे इलायची जायफल वाला टेस्ट आता था, वहां पे हम लोग ने कैरेमल वैनिला फ्लेवर डाल के उसके बार फॉर्म में शेप में लाके हम लोग ने कॉलेजेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब तक मेरे पास टीम बिल्ड हो गई थी। मेरे पास 2 फील्ड स्टाफ थे, मेरे पास मेरे कंसल्टेंट थे, मेरा अकाउंटेंट था एंड मैं। सो हम लोग ने एग्जीबिशन सीट करने स्टार्ट कर दिए विद इन बार, बार एंड लड्डू, ये हेल्दी वर्जन में स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते करते हम लोग को एक बार रियलाइज हुआ कि आज एक बार कोई मेरा बार ले रहा है, बट सेकेंड टाइम जाके साइड के शॉप में जाके वो वेफर्स ही खा रहा है। अगर उसको वेफर्स ही खाना है प्रिजर्वेटिव के साथ, अगर कोई खाना चाहता है, तो हम लोग अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को क्यों पीछे रखें? इसीलिए मैंने अपनी चकली एज इन अपना जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, महाराष्ट्र ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो साल भर खाया जाता है, जो चाय के साथ अच्छा लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ अच्छा लगता है। सो ये प्रोडक्ट को मैंने हाथ लगाया और मैंने सोचा कि मैं चकली में बल्क मैन्युफैक्चरिंग में उतरूं। आज मेरी फैक्ट्री में इन अ डे 1 टन चकली बनती है। और वो अगेन मैं व्हाइट लेबल में बहुत सारे ब्रांड्स को देती हूँ। अभी मेरे पास 14 ब्रांड्स है, उसमें से जो 4 ब्रांड्स है वो बहुत बड़े ब्रांड्स है जिनके लिए मैं चकली मैन्युफैक्चर करती हूँ और उनको देती हूँ। तो हमें एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा एक ध्यान रखना है कि जब हमारा प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता तो वो प्लान ए को सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग को प्लान बी पीछे रेडी रखना पड़ता है। और प्लान बी इसलिए नहीं है कि आपको अपना पाथ चेंज करना है, शायद आपको सिर्फ आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग वो चेंज करना है कि आपको कैसे आगे जाना है, वो प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। जिस वक्त मेरी चकली प्रमोट होना स्टार्ट हो गई, मार्केट में मैंने चकली डालना स्टार्ट हो गया। चकली के लिए मैंने बोला कि मेरे लड्डूस भी आपको अपने यहाँ पे रखने पड़ेंगे। और मैंने हर शॉप में चकली के साथ मेरे लड्डूस रखना स्टार्ट कर दिया। चकली एंड लड्डू दोनों का सेल मुझे धीरे धीरे शॉप्स में दिखने लगा। जैसे ही शॉप वालों ने एक्सेप्ट किया कि लड्डू के बॉक्सेस, वैसे ही कस्टमर्स ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग ने फ्री सैम्पलिंग स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया, रेलवे स्टेशन पे किया। जो अम्मी उद्योजनी के एग्जीबिशन है वो हर महाराष्ट्र के जिला में जाके हम लोग ने किए और वहां पे हम लोग ने उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त जो 5 लड्डू के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज 45 प्रोडक्ट्स तक हम लोग पहुंचे हैं। आज 40 मेरे पास व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरर्स है जिनके लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। मैन्युफैक्चर्ड बाय में सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड दिख रहा है। लास्ट जून में हम लोग लिस्टेड हो गए। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नाउ। हम लोग ने इसका आईपीओ रेज किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से। मतलब बहुत बार हम लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे जब मार्केट में लेके जाना था कि ये आईपीओ सिस्टम है क्या, जब मैंने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया तो फंड रेजिंग ये चीज आईपीओ से हो सकती है। पब्लिक फंड्स देती है, ट्रस्ट करते हैं, और आपको अगर आपके ऊपर ट्रस्ट है, बिलीव है,
आप उसको सक्सेसफुल कर सकते हो, तो आपको ये वे पे जाना चाहिए। प्रोडक्ट लाइन सेट करते करते आई रियलाइज कि हम लोग मार्केट को कहीं ना कहीं पकड़ने के लिए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। ब्रांडिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा फंड लगता है। एक अराउंड आपको मैं बताऊं तो एक लेबल लगाना, एक पैकेट के ऊपर लेबल लगा के एग्जीबिशन में खड़ा रहना, ये ब्रांडिंग नहीं है। मैं अगेन, सारे होममेड प्रोडक्ट्स आजकल आए हैं जिसके ऊपर एक लेबल लग जाता है और हम लोग ब्रांड में है ऐसे बोला जाता है, बट ब्रांडिंग इज नॉट द लेबल। इसको प्रमोट करना, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग को दिखना, हमारे प्रोडक्ट्स को दिखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बट जिस वक्त हम लोग ने प्रोडक्ट ब्रांडिंग का प्लान किया, तो एक ये बजट से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। और ग्रो करना या पाथ डिजाइन करते वक्त ये था कि ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। सो उस मोमेंट पे, उस बात पे हम लोग ने डिसाइड किया कि एज एन सोनाली कोचरेकर, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ही, मैं फार्मासिस्ट हूँ ही, मेरी टीम ने मुझे प्रमोट करना, मेरे सेशंस बढ़ गए, मैंने सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया, मैंने वुमन एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करना स्टार्ट किया। मैं महाराष्ट्र के हर जिला में जाती हूँ जहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हूँ, उसके साथ मेरे प्रोडक्ट्स को भी लेके जाती हूँ। और ऐसे मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज रहेंगी जो, चलो हम लोग क्वालिफाइड है, बट वहां पे है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाती है, बट उनको पता नहीं है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे पकड़ना है। मैंने बचत गट्स को हिट करना स्टार्ट कर दिया। बचत गट ये कंसेप्ट हमारे महाराष्ट्र में बहुत ह्यूज लेवल पे चलती है, और बचत गट को हिट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आज भी रत्नागिरी के एक बचत गट से मैंने लास्ट दिवाली में अराउंड 5 टन चकलीज ली है। जो लेडीज 50 किलो की चकली बनाते थे या लड्डू बनाते थे, उनको हम लोग ने 500 kg और 1 टन 2 टन तक लाने की कोशिश की। उनके ग्रुप्स बनाए, उनको ट्रेनिंग दिया, मेरे एक एग्जीक्यूटिव वहां पे जाके मैंने वहां से प्रोडक्ट्स लाना शुरू कर दिया। बचत गट के द्वारा प्रमोट करने के वजह से, बचत गट से सपोर्ट लेने की वजह से मुझे कुछ गवर्नमेंट एंड एनजीओज मिले, जिनको हम लोग लड्डू सप्लाई करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो मेरा फर्स्ट एनजीओ जहाँ पे मैंने लड्डूज दिए थे वो था विराट कोहली फाउंडेशन। यहाँ पे विराट कोहली, उन्होंने भी हमारे लिए ट्वीट किया है, सोनाली के लड्डूज उन्होंने खाए हैं, उन्होंने देखे हैं, और हमारे वेबसाइट पे उनका ट्वीट दिखेगा। तो हम लोगों ने पहले मैं उनके यहाँ पे गई, मैंने लड्डूस दिखाए, मैंने ये कंसेप्ट पहले बोला कि अगर आप जो भी दे रहे हो उसके साथ एज ए न्यूट्रिशनल नीड हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको हम लोग वहां पे लेके जा सकते हैं। सो आपने अगर देखा होगा तो जर्नी ऐसे है ना कि हम लोग एक प्रोडक्ट को लेके आते हैं, मुझे ये पैकेट में लाना है, पैकेट बेचना है, पर पैकेट बिक नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे और वेज चूज करने पड़े। तो हमेशा हमें बी प्लान, सी प्लान के साथ रेडी रहना चाहिए। आपको इनिशियल लेवल पे ही एक्सपर्ट्स की सपोर्ट लेनी चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं मैं ही अकाउंटेंट, मैं ही ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगी, मैं ही प्रोडक्ट बनाऊंगी और मैं ही सब कुछ देखूंगी, तो ये में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप जो ग्रोथ पेस ले सकते हो वो ले नहीं पाते। तो आपको ही इस हर एक चीज के लिए एक एक एक्सपर्टी, वो फील्ड का एक्सपर्ट आ जाता है तो आप मार्केटिंग के लिए फ्री हो जाते हो। और मार्केटिंग के लिए जब एज एन ओनर आप बाहर निकलना स्टार्ट करते हो, तभी बिजनेस मिलता है, तभी आपको वेज मिलते हैं, तभी आपको चांसेस मिलते हैं, तभी आपको ब्रांड्स मिलते हैं। ब्रांड्स मिलने के लिए इंटरप्रेनर को या किसी भी बिजनेस वुमन को, बिजनेसमैन को, उनको बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि आप ऑफिस में बैठ के ही बिजनेस ला सकते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इसलिए आपको आपकी टीम, एक वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड टीम रखनी पड़ती है, और उसका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग मशीनरीज के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एट द सेम टाइम हमें अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग को वो स्पीड चाहिए, हम लोग को उस ग्रोथ को बहुत जल्दी पकड़ना है। अदरवाइज मैं ऑनलाइन मार्केटिंग लर्न करूंगी और उसके बाद मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगी, इसका जो टाइम फ्रेम है, टाइम गैप है, वो कवर करते करते एक बोलते हैं ना, एक टाइम बहुत बड़ा निकल जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरे एक्सपीरियंसेस से एक्सपर्ट्स पे इनिशियल लेवल पे पहले ही आप इन्वेस्ट कीजिए, आप मशीनरीज पे इन्वेस्ट कीजिए, और आप जो भी ड्रीम देख रहे हो वो बड़ा देखिए। जिस वक्त मैंने बल्क में काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं मेरे 500 स्क्वायर फीट के फैक्ट्री से 1500 स्क्वायर फीट पे पहुंची, और वहां से मैंने स्ट्रेट जंप लिया, 2000 स्क्वायर फीट, सॉरी 4000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री ले लिया, और मैंने मशीनरीज डाल दी। जब मैं 2 टन दिन का बना रही थी, तब मैंने मेरा फैक्ट्री 4 टन का बना के रखा था। जब मैंने 4 टन बनाना स्टार्ट किया, उस वक्त मेरा फैक्ट्री ऑलरेडी इक्विप था 10 टन के लिए,
अ डे का। इसका रीजन है, जब आप क्लाइंट्स के पास अप्रोच करते हो, जब भी मैं भी साड़ी के शॉप में जाती हूँ, फॉर एग्जांपल लेडीज को जो समझ में आए, मैं जब साड़ी के शॉप में जाती हूँ, बाहर बहुत अच्छी अच्छी साड़ीज लटकी हुई रहती है, मेरा बजट मुझे पता है शायद मुझे 1000 रुपीज की लेनी है, बट बाहर की साड़ीज देख के मैं अंदर घुसती हूँ। तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको आपकी इंडस्ट्री का सेटअप इतना होना चाहिए कि आप जो बना रहे हो उससे बड़ा होना चाहिए, तो आपके पास हमेशा वो पेन रहेगा, टेंशन रहेगा कि मैंने तो 10,000 या बोलते हैं ना 2000 2 टन का फैक्ट्री बना के रखा है, मैं दिन का सिर्फ 500 kg बना रही हूँ, तो मुझे वो 1.5 टन का प्रेशर है, मुझे मार्केट में घूमना है, मुझे वहां तक जाना है, अगर मैं वहां तक जाऊंगी तो मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को यूटिलाइज कर पाऊंगी, मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। प्रॉफिटेबल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट करना, एमआरपी सेट करना, ये सारे कॉस्टिंग के मेथड। कॉस्टिंग प्रॉपर सेट करना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना, रॉ मटेरियल कॉस्ट को ध्यान में रखना, इसको स्टडी करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोलती हूँ कि ये इंडस्ट्री में इंटर करने के बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे जिनसे मिला है वो मेरे कॉम्पिटिटर है। जिस वक्त मैं बॉक्स बेच नहीं पा रही थी, मैंने बहुत अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनके यहाँ पे जाना शुरू कर दिया, जो ऑलरेडी बड़े ब्रांड लेके बैठे हैं। लड्डू ये नाम से ही आप लालबाग दादर साइड जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड मिलेंगे जो सालों साल से लड्डू बना रहे हो। मैंने उनको अप्रोच किया और उनको बोला कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट बना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपके कॉम्पिटिटर्स आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। जब आपके कॉम्पिटिटर आपके दोस्त बनते हैं तो आपके लिए बिजनेस करना ज्यादा इजी हो जाता है। मैंने उनके लिए प्रोडक्ट बनाते बनाते अपने ब्रांड को सेट किया है। आज मैं इनके साथ बात करती हूँ, उन्होंने मुझे 2 साल इतना फ्यूल दिया कि मैं अपना ब्रांड ला पाई मार्केट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने कॉम्पिटिटर्स से मिलो, उनसे बात करो। जैसे आप कभी भी लड्डू या चकलीज या इंडियन प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो तो आप आके मुझे मिलो कि आपने क्या फेस किया या आप क्या कर सकते हो। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि मैं बाहर से कैसे सोर्सिंग कर सकती हूँ। जैसे मेरे कॉम्पिटिटर ने बोला कि मेरा एक लड्डू सोनाली आप बना दो, आप बना लेते हो, आपकी कैपेसिटी है, आप बना लो। और उस वहां से मुझे एक जो किक मिली वो आज तक मैं दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, ये बात पे टिकी हुई हूँ। तो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से बात करनी चाहिए। कॉस्टिंग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्टिंग पे ध्यान ना दे तो बिजनेस जितने जल्दी ऊपर जाता है उतने ही जल्दी नीचे आ जाता है। तो अपने हमें कॉस्टिंग का पूरी तरह से ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग को कॉस्टिंग के मैटर पे भी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने भी घर से स्टार्ट किया था, शायद लड्डू में घर से बना रही थी तो मुझे 250 रुपीज kg ये कॉस्ट सही लग रही थी, ठीक लग रही थी। बट जैसे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा स्टाफ का कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब बढ़ने लगे तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट एक अलग लेवल पे बढ़ गया। और फिर उसका मार्केट भी चेंज हो गया। जैसे होममेड लड्डू से तो घर की लेडीज लेती थी, ऑफिस जाने वाली स्टील के डब्बे में लेके जाती थी। जब मैंने बॉक्स में लाया तो मुझे कॉर्पोरेट में पिच करना पड़ा। तो आपको हर वक्त अपने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि आज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट दे रही हूँ, ये प्रोडक्ट अगर उसका कॉस्ट बढ़ता है तो उसका भी एक मार्केट है, उसके आगे जाती हूँ मैं ब्रांडिंग में जाती हूँ तो उसका भी एक मार्केट है। और आपके मार्केट को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज रन करनी पड़ेगी। जैसे पहले मैं लोकल एग्जीबिशंस करती थी, आज मैं आहार आईटीपीओ जो दिल्ली के एग्जीबिशन है वहां पे सेट करती हूँ, क्योंकि वहां पे आने वाला कस्टमर एंड क्लाइंटल बेस ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। वो लोग बल्क में काम करते हैं, उनको व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है। और आपको हर वक्त वो ट्रांजिशन करना पड़ता है, वो ट्रांजिट पीरियड आपको अंडरस्टैंड करना है कि अभी मुझे यहाँ से मूव के ऊपर जाना है, मुझे एक्सेलरेट करना है, मुझे इससे ऊपर जाना है, मुझे इससे ऊपर जाना है। इन दिस 4 years आप मतलब जैसे मैंने 3 साल कंप्लीट किए, मैंने मेरे आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो हिट करना था मुझे अपने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए, तो वो टर्नओवर मैंने एक हिट कर दिया था। जैसे मैंने उसको टच किया मैंने अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो ये प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो 1 year 1.5 year तो हो ही लग ही जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उससे पहले आइडेंटिफाई करना कि मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, और उसके लिए लगने वाली टीम, उसके साथ लगने वाला सपोर्ट, उसके साथ लगने वाले फाइनेंसेस, उसकी तैयारी करके ही आप वो स्टेप चढ़ पाते हो। तो इसकी तैयारी हम लोग अलग से कैसे करते हैं? तो मार्केट में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स मिलते हैं, फंड हाउसेस है, जिनके यहाँ पे जाके आपको अपनी आइडिया डेडिकेटिवली प्रेजेंट करनी है, आपको बताना है, वो ट्रस्ट बिल्ड करना है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आपको कहाँ तक जाना है, आपको आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है। तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अगर लड्डू पे मेरा प्यार नहीं होता, मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैं उसको नहीं मानती, तो मैं उसको आगे नहीं लेके जा पाती।
तो आपको अपने प्रोडक्ट पे पूरा ट्रस्ट हो, बिलीफ हो, उसी के बाद आप बिजनेस कीजिए या उसी के बाद वो प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आइए। आज भी मैं आज 50 प्रोडक्ट बनाती हूँ, बट आज भी मेरा नाम लड्डू या लड्डू वाली सोनाली या लड्डू मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी आईपीओ में आई ऐसे करके प्रमोट हुआ। तो आपका जो कोर प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी पंचलाइन बन जाता है। तो आपको वो पंचलाइन आपको हमेशा रखनी है। आपकी ग्रोथ हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहती है, एक टाइम आता है उसके बाद ही आप आगे ऊपर चले जाते हो। तो वहां तक सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम लोग एक टाइम के बाद, जैसे ही मेरे बॉक्स के लड्डू नहीं चले और मैंने सोचा होता कि मैं लॉक लगा देती हूँ और बंद कर देती हूँ, अगर ये मैं सोचती तो शायद मैं ये लेवल पे नहीं होती जहां पे मैं अभी बैठी हूँ। बट आपको सस्टेन करना है, आपको मार्केट में आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके ऊपर आपको सोल्यूशन तो मिलते ही है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं फार्मासिस्ट थी, मैं न्यूट्रिशनिस्ट थी, व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू डू एंड व्हाट आई कैन डू, इसमें बहुत डिफरेंस था। आई कैन बी अ फार्मासिस्ट और एनीथिंग, मैं डांस कर सकती हूँ तो मैं डांसर बन सकती हूँ, बट आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और वो बहुत क्लियर और स्टेटमेंट था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब ये जर्नी पे आप उतरते हो तो हर स्ट्रगल के लिए माइंडसेट रेडी करना है, क्योंकि हर वक्त हर दिन एक स्ट्रगल है। बट जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है जो चीज मैं कर सकती हूँ वो हर एक लड़की, हर एक वुमन, हर एक मेल कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट में लिस्टेड होने के लिए या मार्केट में ब्रांड बनाने के लिए 50 साल निकालना। आपका डेडिकेशन, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ हो तो आप वहां तक पहुंच ही जाते हो। आपको कहीं पे भी अपने होप्स नहीं छोड़ने, जिस वक्त होप्स छूटेंगे उस वक्त बिजनेस हाथ से छूट जाता है। ये जर्नी में हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे बड़े शख्स जो बड़े हैं अपने कॉम्पिटिटर से, वैसे ही छोटे हैं जो कॉम्पिटिटर से। मैं भी कभी ना कभी छोटी थी, मैं भी काउंटर पे सेल करती थी, मैं भी सिर्फ लेबल पे सेल कर रही थी। बट मैं जब ऊपर आई तो मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए कहीं ना कहीं मैं आज उनके साथ खड़ी हूँ और उनको कॉम्पीट कर रही हूँ। तो वो विजन होना बहुत जरूरी है। फंड्स और इसका नॉलेज होना कि कहाँ कहाँ से फंड्स ला सकते हैं, और उसके लिए हमेशा ही अपने आप को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपनी कंपनी को प्रमोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप खुद को प्रमोट करते जाओगे, कंपनी को प्रमोट करते जाओगे, आपके विजन को प्रमोट करते जाओगे, आपके पास इन्वेस्टर्स सामने से आते हैं। मेरे पास इन्वेस्टर्स सामने से आए। मेरी मेहनत ये थी कि मैंने अपने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, मेरा विजन बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे इतनी 2000 लेडीज को काम पे रखना है, ये मेरा एक विजन था, क्लियर कट विजन। नॉट ओनली द पैसा कमाना बट उसके साथ एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बीइंग एन फीमेल कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट दूंगी। मेरे यहाँ पे मैक्सिमम लेडीज काम करती है, मेरी मार्केटिंग टीम में भी 80% लेडीज है। अभी मेरा टीम बड़ा है, हम लोग कुछ प्रोडक्ट और लेके आ रहे हैं, और हर एक छोटे गैप के बाद आपको एक ट्रांजिशन का टाइम आता है, आपको प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके लिए आपका माइंडसेट आपको रेडी रखना पड़ता है। जैसे मैं अभी लास्ट वीक में एक एग्जीबिशन में गई थी, वहां पे मुझे पता चला कि मैं लोगों से लड्डू नहीं बनवा रही हूँ, या मैं अपने यहाँ पे कोई बंदी नहीं रख रही हूँ लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को मेरे हाथ के लड्डू अच्छे लगते हैं। आपके हाथ के लड्डू अच्छे लगने वाले 50 लोग हैं, बट आपका टारगेट हमेशा 500 और 5000 होना चाहिए या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। और इसलिए आपको मैन पावर लगेगी लगेगी, आपको नीचे आपके बंदे ट्रेन करने ही पड़ते हैं, आपको मशीनरीज लानी पड़ती है, रेसिपीज में चेंजेस करने पड़ते हैं, कॉस्टिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हर एक चेंजेस के लिए हमारा माइंडसेट रेडी होना बहुत जरूरी है कि मैं बनाऊंगी तभी सेल होगा, ऐसे नहीं होता। हर एक चीज के लिए वे है, आपको हर एक चीज को ओवरकम करना है, आपको उसको क्रॉस करके आगे जाना है। आज सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अगेन फ्रोजन फूड में उतर रही है। हम लोग स्नैकिंग में थे, स्नैक्स बना रहे थे, लड्डू, चकली, फरसान, ये करते करते एनर्जी बार तक आए, भेल तक आए, और ये अभी हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करके इसको फ्रोजन फूड तक लेके आ रहे हैं। तो आज सोनालीज में फरसान ही नहीं तो फ्रोजन फूड भी अभी हम लोग प्रमोट करना, हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है।
तो आपको डे बाय डे आपकी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना पड़ता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेट करना पड़ता है, बहुत सारी लीगलिटीज आती है, आपके लाइसेंसेस क्लियर करने पड़ते हैं। तो लीगल टर्म में जब आप क्लियर रहते हो, आपके टर्नओवर टर्म पे आप क्लियर रहते हो, आपकी अकाउंटिंग और बैंकिंग सिस्टम में आप अच्छी तरह से सब काम कर रहे हैं, आपके पास उसके लिए टीम है, वो पूरा टीम वहां पे पूरी तरह से फोकस होके काम कर रहा है, तब आप मार्केटिंग के लिए बाहर उतर पाते हैं। मार्केट में आना, मार्केट में खड़े रहना, मार्केट में बात करना, खुद को प्रमोट करना, अगेन एंड अगेन मैं यही बोलूंगी कि खुद के प्रोडक्ट को आपको खुद प्रमोट करना पड़ता है। जब आप बिजनेस में आ रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। प्लान ए के साथ प्लान बी, सी, डी, ई ये भी रखना बहुत जरूरी है। मशीनरीज के साथ अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करना, रादर मैं बोलती हूँ मशीनरीज से ज्यादा अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि मशीनरीज भी कौन सी मुझे नेक्स्ट लेनी है ये अंडरस्टैंड करने के लिए भी अगर अच्छे लोग हैं, वो मार्केट का रिसर्च कर रहे हैं, सब कुछ डेटा उनके हाथ में है, तो हम लोग देख सकते हैं कि नया मशीनरीज लाना है या नया इंडस्ट्री सेट करना है। तो आपको सबसे पहले ओवरऑल अच्छे मैन पावर, अच्छे रिसोर्सेस पे स्पेंड करना चाहिए, मशीनरीज पे स्पेंड करना चाहिए। और ऐसा कहीं नहीं होता कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स को कहीं पे पीछे लिया जाता है। एक ही चीज है जहाँ पे पीछे की, वो ट्रस्ट का फैक्टर आता है। जब आप बैंक में खड़े रहते हैं तो बैंक आपको डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करता कि आप कर लोगे ना मैडम, आई श्योर ये हो सकता है आपसे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मैं जब बैंक में फर्स्ट टाइम खड़ी रही थी, उनको भरोसा नहीं था कि मैं वो लोन उनको रीपे कर सकूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से लिया हुआ 50 लाख ऑलरेडी रीपे कर चुकी हूँ 3rd ईयर में। तो उस वक्त उनको बिलीव नहीं था। और हमेशा एक लेडी को पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड बिजनेस में या जॉब कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, चलो ट्रस्ट कर सकते हो और उनको हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग ने कुछ और एक्टिविटीज रन की, जिसके बाद बहुत सारी लेडीज जो मेरे जैसे सिंगल थी, जिनको किसी भी सपोर्ट के बिना खड़े रहना था, ऐसे लेडीज के लिए हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया, जहाँ पे वो आती है, हम लोग बैंक के लिए अप्रोच करते हैं। जिस वक्त हमें बिलीव होता है कि ये लेडीज या ये लड़कियां ये अकेले इनके प्रोजेक्ट में दम है, इनके आइडियाज में दम है, तो हम लोग ने बैंक में अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है अभी कि लेडीज के लिए मार्केट खुला नहीं है, कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलती है, बिल्कुल नहीं है। सेकेंड थिंग, बीइंग इन महाराष्ट्र, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि इतना सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए या गवर्नमेंट के जीआर के लिए। मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, मैंने एनजीओज के साथ काम किया है। मैंने एनजीओज में मैं डायरेक्टली गई हूँ, किसी भी एजेंट या किसी भी मिडल मैन की के सपोर्ट के बिना। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि डायरेक्ट होता नहीं है, क्योंकि वो मेरा जो नेबर है वो बोल रहा है ये डायरेक्ट होता नहीं है, बट वो नेबर ने भी ट्राई किया, वो नहीं रहता। तो हमें किसी और के बात पे कितना ट्रस्ट करना है, ये हमें पहले देखना चाहिए। किसी के वर्ड्स पे भरोसा करने से पहले हमें वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का लोन किसी को नहीं मिलता या मिल ही नहीं सकता, ये बोलने वाले लोग, जब मैंने 50 लाख का लोन लिया, आई वॉज द फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम महाराष्ट्र जिसने 50 लाख का सीएमईजीपी लोन लिया था। मतलब इससे पहले अप्रोच ही नहीं किया गया था वो लोन के लिए। वो वहां पे लोन देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे, शायद एक बार में वो दरवाजा ना खुले, 2 बार में ना खुले, 3 बार में ना खुले, बट चौथी बार खुल जाएगा। और वो जो एफर्ट्स है, डेडिकेशन है, वो कायम रखना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन हमेशा आगे की बात सोचते हैं, बिजनेस वुमन हमेशा आगे की बात करते हैं। दो जो बिजनेस में है, उनको आगे का दिखता है, इसलिए वो आज इन्वेस्ट करते हैं। तो आगे अगर आपको दिख रही है वो चीज, तो उसके लिए आज आपको एफर्ट्स डालनी है, मेहनत करनी है, और वो आपको आज ही करनी है। शायद उसके रिजल्ट्स कल ना दिखे, बट परसों दिखे। और वो परसों आने तक आपको डेडिकेटिवली काम करना है, आपको डेडिकेटिवली एफर्ट्स डालने हैं। कहीं पे भी कि मैं हूँ, मुझे ही क्यों नहीं होता या मुझे नहीं मिलता, ऐसे नहीं होता। मेरे लिए भी 7 महीने गए थे, बिकॉज मैंने ये कोविड में स्टार्ट किया था। 7 महीने, आज वही फाइल्स 1.5 महीने में क्लियर हो जाती है, सीएमईजीपी पीएमईजीपी के लोन की। और अच्छी आइडियाज, नई आइडियाज के लिए वो बहुत वेलकमिंग है। आपको किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्ट्रेट अवे ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद उनके ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जहाँ पे आप जाके बैठेंगे वो बहुत ही पोलाइटली आपको सब कुछ बता देते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, उसमें वो लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक से सपोर्ट चाहिए तो बैंक में भी आप इसको इतने ही कॉन्फिडेंटली बैठना है।
बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका एंड पॉइंट नहीं बोलती, बट एक है कि ये ईयर एंड तक या नेक्स्ट ईयर के एंड तक मुझे कहाँ तक पहुंचना है, वो एक एंड पॉइंट डिसाइड करना है, उसके बाद भागना है, क्योंकि बिना एंड पॉइंट के आप भाग नहीं सकते। अगर आपको पता नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो आप आपका रोड मैप या पाथ कैसे डिसाइड करें। तो आपको डेस्टिनेशन डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ तक जाना है। जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मेरी प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है, मुझे एक टर्न और इतना लाना है, और मुझे एक्चुअली पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, और मुझे लगता है ये पॉसिबल है। सब लोग नहीं बोलते। जब ये आइडिया मैं जब इनिशियल लेवल पे बोल रही थी, तो किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, वेलकम नहीं किया, या रादर यही बोला कि ये रिस्क है, इसे नहीं करना चाहिए, और ये हर किसी के साथ होता नहीं है। बट जो हर किसी को नहीं दिखता वही एक एंटरप्रेन्योर को दिखता है, और जो हर कोई नहीं कर पाता वही एंटरप्रेन्योर कर जाता है, अगर उसमें वो डेडिकेशन है। सो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे हर टाइप की इन्वेस्टमेंट है। आपको शायद आपके त्योहार, आपके फैमिली फंक्शंस अटेंड करने ना मिले, रादर मैंने फर्स्ट 3 इयर्स तक मैंने कोई फेस्टिवल या फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया है, और आज भी बहुत कम मिल जाते हैं। बट ये जर्नी बहुत इंजॉयबल, मतलब एक बार आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। और वंस ये जर्नी में ये पाथ पे जो आते हैं, आपने अगर देखा होगा, जो बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन एक लेवल पे पर पहुंच जाते हैं, उनके चेहरे पे एक ग्लो दिखता है, आंखों में एक चमक दिखती है, क्योंकि उनके सपने उनको इतने नजदीक दिखते हैं कि मुझे सिर्फ जाना है, हाथ बढ़ाना है और उसको अचीव करना है। और वो हाथ बढ़ाने का डेडिकेशन और पावर रहता है ना, वो उनमें आ गया होता है। सब मिला इसलिए वो ग्लो नहीं रहता, जो आगे दिख रहा है वो अचीव करने का कॉन्फिडेंस है, जो आपकी आंखों में चमक और ग्लो दिख जाए। तो मैं यही बोलूंगी कि थैंक यू सो मच गोखले कॉलेज फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे ये शेयर करने का आपने मौका दिया। आई बिलीव कि सारी जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स है या अपने जो नए बच्चे हैं, मैं बोलूंगी कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। इस रिगार्डिंग किसी भी तरह का हेल्प आपको चाहिए, अगर डायरेक्टली मुझे कनेक्ट करना है तो फिर भी आउटी सर के पास मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से हम लोग फंडिंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं, और प्रोडक्ट लाइन अच्छा हो तो हम लोग सोनालीज में उसको ऐड करके भी लेते हैं, वो पर्सन को भी और प्रोडक्ट को भी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Very much, ma'am, for your real life experiences. Being a woman, I really feel proud for you, ma'am. Success journey was really full of struggles, but you didn't give up and you overcame each and every challenge very successfully. You have not only shared your experiences, but here you shared your passion, your courage, your struggles, your patience, your visions, and risk-bearing qualities. It is really very inspirational and motivational for us. I'm sure that our students are really inspired and enjoyed the session. Thank you very much, ma'am. Now, Sorry for the inconvenience caused. I have some connectivity issue. Now I request President of the function, Mr. Mahendra Bhai Kapadia, to deliver his presidential address. Good morning, everyone. All the fortunate audience, the students, faculty, those who have listened very carefully to Ms. Sonali's personal experience. I think you would have really appreciated the guts, the strength, the courage, and of course, a long-sightedness, far-sightedness, which
Sonali Madam has exhibited, and at a very young age. So, what the key message, what I would like you all to take is that nothing is impossible in this world. This is the key message. It's all in here. As they say, anything which is seen outside is made twice. Once within your own mind, your own planning, as she said, vision, then only it can come outside. Right? So you've got to create your own self-confidence and a paraphernalia, because I think Sonali Madam's journey has shown much more actually. Everyone doesn't go through that. Yes, some women, and I was very proud to hear that you were the first woman who got 50 lakh rupees of loan, and which was nobody approached the banks. So that's something great. And that also proves the point that that was her commitment, because the banks, like your friend, even if you ask for 100 rupees, he won't give, or 500 rupees, he would possibly not share, because he doesn't know what is your intention, will you be able to return. So the banks are the last person to trust, let me tell you. And unless you show your real heart and soul and commitment into what you want to do, your life is at stake. That is where they believe that you will take, let's say, 1 lakh, and you will be able to generate 3 lakhs, because then only they will be able to give you 1 lakh. That's the business principle. Typically, you must be able to rotate your fund and at least get, 3 times or 4 times from whatever the cash that is coming to you. So let me tell you a little bit of the entrepreneurship, which I know at your young age, it's little too demanding to think, even entrepreneurship for many of you, right? I remember myself, much earlier, in my heart, I wanted to be an entrepreneur, but I took up a job. Now, this is one very, very big caution that you must keep in mind, that your focus for your life must be clear as early as possible as you come out of your engineering college. Whichever college you have done. Can we, is there any way to, Mr. Oti, Dr. Oti, can we have the, what do you call, the spotlight for the speaker here? Is it possible? Yeah, Dr. Oti. Okay, let me continue. Right? I don't know. Does this help you? Does this mean, does this show any different picture on the Zoom? Hello? Am I audible? Let me ask you first of all. Yes, you're audible. Okay. Is this picture like a spotlight, or it is the earlier version where number of people are visible on the Zoom? The same one. Yeah, same one. Okay. So let me continue. No problem. So what I was saying is the heart of the person has to be very clear that I want to be an entrepreneur. I mean, make that mind very clear. Some of you are quite clear about it. Some of you are still in a gray area, and some of you are possibly, absolutely clear that I can't handle this. Let me tell you, the first category is confident. It will require the efforts like what Sonali Madam has done. But the category 2, who is having a gray thinking, I can do, I may not be able to do. So that's the second category. And third, oh, that's not for me, I will take up a job. The world is changed. The previous generations had limited jobs, limited opportunities. Today, the Indian market is being the largest, one of the topmost market in the world, growing market in the world. There are enough business potential. All kind of buyers are there, as you know.
in the last 3 years after COVID, the marketing pattern has changed. People are ready to buy online, right? Their demands have diversified. They want to experiment. Money is available to many, many young people because, yes, that's what the economy is. And that's why India is talking of being fifth. Today it is fifth largest, and India is talking of being the third largest economy in the world. So that power is coming because Indian incomes are rising. There is a double income in the family. And third is there is a huge amount of export taking place from India. So a lot of foreign exchange coming, and also a lot of huge investments, infrastructure, a lot of money is coming from overseas. So all this money is coming to your hand. And that's why the markets are buoyant. Markets are booming. Stock market is booming last almost 10, 15 years. So these are the indications. So you've got to develop confidence that markets are very, very buoyant. So that should help you build your confidence that let me experiment. Now, the key lies in, like also Sonali madam did, maybe a couple of years, learn the techniques of the business, learn the techniques of working, manufacturing, marketing, whatever that you want to do. Get hands-on experience, so at least for 3 years in my view. And then, like, if possible, you do have your savings and then move forward into your own investment decisions. So be very positive. The world is welcoming you. Banks are welcoming you. Government has got lots of schemes and funds to provide you initial fund so that you can try out, your businesses. So be very positive. I was just looking at the internet, and there are so many, agencies, university guidelines. There's so much of guidance available on the internet for India. I'm talking for India, right? And yes, I think you have huge guidance, but one of the key element is, have, in my view, at least one of your friend, colleague, be together. Don't be a sole operator to begin with till you learn the ropes of business. Sonali madam was very, very strong. And I heard somewhere she said she was a lone parent, single parent. So that required much more guts to initiate such a thing. Let me just touch upon one or two more aspects. There was a survey done by National Center for Education Statistics, which said that what kind of background is the best for being an entrepreneur. And the survey indicated it is a business administration and finance. They come right on the top. So a third is the marketing. So I think you all being commerce students, you of course are much familiar about business aspects of it. And so you have all that knowledge which is required for the entrepreneurship to begin with. There are other areas like computer science, communication, but then okay. But the top three are business, commerce, finance, and marketing. Okay. What more? I am from IIT, so I know a little bit about the kind of startup support which IITians got in the much earlier, maybe 20 years ago, 15 years ago. There is a foundation called Vadhwani Foundation. Mr. Vadhwani himself is an ex-IITian. He returned, he is, I think, based in US, but he shuttles between US and India. And he is very much guiding on the scene of India on startup. So if you go to Vadhwani Foundation, I'll share the information with Dr. Oti, and then Dr. Oti can share with all of you. He has number of ideas identified for students, And one important thing which I have observed at IIT, where today 80% of the students think of entrepreneurship. It's a 4-year course, but they start thinking of their, startup first year itself, or maybe second year. So early you start, the better will be the clarity of your business idea, what you want to do, how you want to do, get your partner, get your friend together. And you have a 2 to 3 years of learning time, knowing about what is that
what is that you want to do and how you want to do it. So get in touch with this Vadhwani Foundation. In fact, they have identified 20 startup ideas. So you can have a look at it. Some of them are in the modern world: content writing, online training, coaching service, virtual assistant service. Of course, there are some physical facilities like home baking, meaning baking of cakes or biscuits or things like that. So, yes, so that's possible. And lots of ideas are there on the net. You can do that. The one important aspect I want to tell you is what is, as Sonali Madam has very amply shown, there are challenges. Now, the entrepreneurship has, entrepreneurs have nobody to look at. Let me tell you that. If you and your partner or you and your spouse or whoever are there together in this, doing this thing, the challenge is on you, because it's your burning ambition is also yours, not anybody else's. So everybody will stop offering support or services unless you keep your motivation very high, your commitment very high, which will mean a lot of hard work. As Sonali Madam did, go all over wherever you have to go, all districts, he said. Maharashtra says so many districts. Can you imagine a lady traveling to all over the Maharashtra? So many places, right? And maybe in the initial stage when she wasn't very successful. So every time somebody is saying no, and now face another person with a request that this is what I do and this, and you have to keep repeating. So that requires lots of courage and lots of, vision and ambition. So the key word which I have found for you is challenges come to expand your strength and capabilities. Can you visualize a big boulder? I'll share this picture because maybe I don't think we have time to share that. A big boulder, you are climbing on a hillock, and a big boulder is going to crush you, let's say. Right? And now you have to save your life. So what are you going to do? It is physically impossible to hold that boulder, but still you will stand. Either you'll run away, then you have failed in your test, but you will stand in front of that boulder, pushing that boulder with your hand. And suddenly you will realize, wow, what a great strength I have got. Right? So that's the test. So when you test out a challenge, you will realize that you can be successful. The closing, I would narrate a few attributes, few personal qualities, which I would suggest at much early stage you can develop, because they are a must as a person. I'm not going to talk about the business side. I think Sonali Madam covered very well what all is required in the business area. But as a person, what you need to do. As a student, what you need to do. I'm going to tell you of 9 points, few points. Curiosity. If you have to do something, you can't be getting everything ready-made. So you have to search, explore, meet people, talk, find out. Curiosity is the first element. Integrity. Integrity means it includes honesty, everything. Meaning I have to be a straightforward. If I play games with anybody, then it will hit back and you will die in the process. So integrity, I'm sure Sonali Madam found that very important. I have to be very honest, straightforward, helpful to my clients, my whoever as a person, right? That's where they trust you. The trust is developed based on integrity. Third, you got to have the ability to take decisions. The more you delay in decision making, the more complications will come. Take a decision, move forward. If something doesn't work, you can come back. You can, quickly come back. But if you don't take decisions, then the problems will multiply. The decision will lead to action. So you got to be action oriented. Then fourth is focus, which Madam said vision. I have a nice a kind of a pictorial picture in my mind. If you want to reach a destination, then will you like to go via highway? Will you like to go via some small gully?
or in Bombay, if you are like, SV Road or one of those the key roads. So what is that you would like to, you'll reach fastest by only being in a highway. So when you are on a journey of your entrepreneurship or for anything in your life, be on a highway. What is your focus? You want to go to church gate? That's your focus. You won't while away your time on a platform. You won't go in some other suburb. You don't want to meet your friend. No, your goal is first go to your main destination. So keep that, no distraction, right? No attraction. Somebody may be attractive. No attraction, right? Okay. Then the fifth is relationship. Business works on relationship. If you give, the person will give you back. If you don't give, if you refuse, you can never hope to get anything from that person next time, right? Because it's all about people, and people follow people. Remember that. However, brand, I think what Sonali madam said very nicely. In spite of she is a big business person now, she is known by Laddu Ali, right? So people follow people. वो जो पहले का जो image है, वो याद रखने के लिए the person is important, not Laddu, not the business, not nothing else. That person behind the Laddu is memorable, not even Laddu, right? Because, okay. Then sixth is be a giver. In business, you give more. That's the part of marketing also. You don't market, meaning you're not selling a product. You give a higher quality, you give timely supply. That's what you're giving. Then they will want to come to you. You don't have to request, persuade. No, you do something more than what anybody else does. Then they're bound to come to you. Next is faith in self. Faith in self. This is very important. My capability, my confidence, my contacts, right? In terms of inner power, even if I fail, I have a faith in myself. I am to also build possibly faith in the Almighty, because many things go wrong. But one thing is there, a very simple example, nothing can go wrong with you. Why? You won't go hungry also. Why? Because birds, they just fly from here to there. Nobody provides them, they don't work for getting food, but they survive. They are very much alive all over the globe. And so food is available to you if you work in a reasonable manner. Business will come to you, food will come to you. And when you develop these qualities, you will definitely grow. And the last element is the hope. Hope is one thing. You must believe that tomorrow is going to be better than today. Even though you are on the worst of the moment today, you say it can be better tomorrow. So I think with this few tips, and this is also my life experience. I have been definitely having gone through a lot of good education, but life is life. So you got to take tough decisions. You got to make clear priority and focus on your strength. Don't think of your weaknesses. Your strengths are what driving you. Your weaknesses are not there. People watch your strength. And that's what you keep doing. And I'm sure all of you who are watching this, and we want in today's India, more entrepreneurs, because the market is waiting for you. The whole of 70% of India, which is in rural area, nobody has developed products for them. If you really look at that, the fridge or AC, mobile, clothing, everything is made for their costlier products and services made for cities like Bombay, Hyderabad, Delhi, Calcutta. But the medium and lower cost products and services which are affordable by the 70% of India's rural people, there is no entrepreneur. Nobody is developing products for them. So the market is huge.
It's up to your creativity, your innovation, right? And your confidence in yourself, whereby you can be successful in your entrepreneurship journey. So let me wish you all good luck and all the best. I must thank Gokhale College, Dr. Oti, Dr. Sant, who have organized this wonderful program to benefit you, and certainly look forward to being an entrepreneur and not seek a job ultimately. And that way you are going to help your own family, in future. So be confident, be bold, and take your first step forward. There is one single line poem which I remember, which is in Gujarati, but let me say I remember since my school days. There is a poet, Kavi Narbad, is very famous in Gujarat. Yeah, what he said in that poem, the poem is long, but I'm going to say only the one title line. Yahom karine pado, fateh che aage. What it means is jump with lots of guts and confidence. Success is guaranteed. Good luck, all of you. All the best. Thank you. Yes, Dr. Oti, please go ahead. Thank you very much, sir, for your positive and meaningful insights. Your words are really motivated us. Thank you very much, sir. My pleasure. Now I request Ms. Gauri Gawar to deliver vote of. Thank you so much, Priyanka ma'am. It's my pleasure to propose a vote of thanks to all outstate. I extend sincere thanks to today's President, CDC member, Mr. Mahendra Kapadia sir, sparing your valuable time for guiding on this occasion. I am grateful to Sonali Kochrekar ma'am for sharing her success story as entrepreneur with all of us. I thank in-charge principal Dr. S.B. Karande sir for welcome speech. Gratitude to our vice principal Dr. Mahesh Auti sir for his constant support and guidance in organizing such event. Thanks all coordinators of self-finance course for their contribution, guidance and support for making this event grand success. Special thanks to Professor Saili ma'am for introducing our guest and Priyanka ma'am for comparing the whole session. Now I thank all faculty of commerce and self-finance course for their presence and active involvement. Special thanks to all our students for their active participation. Lastly, thanks to our technical team and all who directly or indirectly supported us to conduct this session. Finally, a big thank you all YouTube viewers for their participation. With the permission of principal and vice principal, I declare this session, that is lecture series, over. Thank you once again. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Kapadia sir, Kochrekar madam. My pleasure. I was very much touched by Sonali madam's life experience as an entrepreneur. And I have lots of regard, lots of compliments, and Thank you so lots much. of good luck. I think you must write a book on this. Yeah, I wanted to, but I think this journey is not yet completed. So there is some time. It took more 2 years now, but definitely after that, I will definitely think of it. Whole young generation needs guidance, and more guidance from a young person like you, who has started from scratch, from a very normal background. So yeah, I think It's a really inspiring journey. yes. So, Thank you all. okay. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you.